Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. Our subject is science. Unit number 4, lecture number 18. And the topic is animals, invertebrates. If we go through the page number 35 or your science book, so here we learn that animals are further divided into two main groups. They are vertebrates and invertebrates. The definition of vertebrates is the animals have a backbone. They are called vertebrates. And the example of vertebrates are mammals, reptiles, amphibians, fish, birds. While the invertebrates are those who do not have a backbone. The examples of invertebrates are insects and worms. Students, today we learn the detail of invertebrates, but before this, I also define the vertebrates are further classified into 5 groups. The groups are mammals, bird, reptile, amphibian, fish, and the examples are trout, tuna, shark. Belongs to the group of vertebrates, fish. Amphibians are frog, newt, salamander. Reptiles are snake, crocodile, turtle. Birds are pigeon, hen, sparrow, owl, seagull. While the mammals are dog, cat, camel, horse, cow, lion. These all are the example of the 5 groups of vertebrates. We also learn that fish, amphibian and reptiles belongs to cold-blooded, while the birds and mammals are warm-blooded. We also discussed the features of skin of these 5 groups of vertebrates. So the fish covered with scales, amphibians have moist, slippery skin, reptiles have dry skin covered with scales, birds have feathers, while the animals have hairs. We also talk about the habitat of these 5 groups of vertebrates. If we talk about fish, so we learn over here that fish live and reproduce in water. Amphibians can live on land and in water also. Reptiles also live in water and some live on land. Birds and mammals mostly live on land. How can they breathe? Fishes breathe through their gills. Amphibians, their skin and lungs, while the reptile, bird and mammals breathe through their lungs. Reproduction of these 5 groups of vertebrate can be explained as fishes laying eggs in water, amphibians also laying eggs in water, while reptile laying eggs on land, birds laying hard-shelled eggs on land, mammals giving birth to live babies. Students, you can easily understand that
The 5 groups of vertebrates are mammals, birds, reptiles, amphibians, and fish. And the vertebrates are those who have backbone. So today we are going to study about invertebrate. So the definition of invertebrates are those who do not have a backbone. I start the reading. Let's see. Open page number 37. Invertebrates. There are more invertebrates than vertebrates on the earth. ज़मीन पर invertebrates ज़्यादा हैं as compared to vertebrates. Invertebrates do not have a backbone. Invertebrates में रीढ़ की हड्डी नहीं होती. Invertebrates are divided according to the structural features of their bodies. इन्वर्टिब्रेट्स को उनके स्ट्रक्चर मीन्स साग के फीचर्स की बिना पर स्ट्रक्चरल फीचर्स की बिना पर उनको डिवाइड किया जाता है. इन्वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड. इन्वर्टिब्रेट्स को तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज़. उनके जिस्म के जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनकी ही बेस पर उन्हें डिवाइड किया जाता है. Some invertebrates have 3 or more pairs of legs. कुछ invertebrates ऐसे हैं जिनकी legs के 2, 3 या उससे ज़्यादा pairs होते हैं, जोड़े होते हैं. You can see spider, one leg have 2 or 3 pairs. The examples are insects, spiders, crabs. Crabs mean केकड़े. While others do not have any legs. जबकि दूसरे जो हैं उनकी legs नहीं होती. Examples are worms, mollusks, slugs. You can see over here slug do not have any leg. I repeat this paragraph for you people. Please listen attentively. There are more invertebrates than vertebrates on the earth. Invertebrates do not have a backbone. Invertebrates are divided according to the structural features of their bodies. Some invertebrates have 3 or more pairs of legs. Insects, spiders, crabs. While others do not have any legs, like worms, mollusks, slugs. Some invertebrates have antenna. कुछ invertebrates ऐसे हैं जिनमें antenna होते हैं, like insects. और tentacles. Tentacles are like hairs. Anemone, while others do not, like starfish. कुछ invertebrates ऐसे हैं जिनमें antenna होते हैं, like insects. और कुछ में टेंटिकल्स होते हैं, लाइक एनामनी. एक किस्म के ये प्लांट्स ही होते हैं, लाइक. वाइल अदर्स डू नॉट. जबकि जो बाकी हैं उनमें एंटीनास नहीं होते, लाइक स्टारफिश. सम इन्वर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़. कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडीज़ क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लाइक जेलीफिश. वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल. जबकि जो दूसरे हैं उनके क्या होते हैं, शेल हार्ड होते हैं, लाइक स्नेल. यू कैन सी द स्नेल हैव अ हार्ड शेल. और exoskeleton. If I define the word exoskeleton, so it means that exoskeleton means a rigid external covering for the body in some invertebrates or arthropods. Exoskeleton क्या है, like shell ही होते हैं, like ladybird to protect their soft body. Exoskeleton are those shell who protect the invertebrates to protect their soft bodies. Exoskeleton, like ladybird, the function of exoskeleton is, you can see over here ladybird, it is exoskeleton. Their function is to protect their soft body. इनके जो नर्म बॉडीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना किसका फंक्शन है, एक्सोस्केलेटन का. I repeat this paragraph, please listen attentively. Some invertebrates have antenna
or tentacles while others do not, like starfish. Some invertebrates have soft bodies like jellyfish, while others have a hard shell like snail, or exoskeleton like ladybird to protect their soft bodies. This is an important information I want to share with you people. You can see over here, one of the longest known animal is the bootless worm. You can see here, bootless worm. There have been reports of finding specimens up to 55 meters long. The bootless worm's mucus is highly toxic. You can see that bootless worm is one of the longest animal. ये सबसे लंबा जानवर है. There have been reports of finding specimen of 55 meter long. ये कितने मीटर लॉन्ग है? 55 मीटर ही लॉन्ग होता है. The bootless worm's mucus means रतूबत, is highly toxic. Toxic means खून के जहर की वजह से इसकी जो रतूबत है वो हाईली टॉक्सिक है, मीन्स बहुत जहरीला है ये. द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्म्स आर कॉल्ड नेमाटोड. वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉल वर्म है उसे क्या बोलते हैं? नेमाटोड. अब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, ये 20 to 30 ऑफ दैम लेइंग एंड टू एंड वुड बी नीडेड टू इक्वल द थिकनेस ऑफ वन स्मॉल कॉइन. एक छोटा सा जो स्मॉल कॉइन है उसकी इसका जो स्मॉलेस्ट वर्म है उसे नेमाटोड बोलते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 20 to 30 है, लाइक स्मॉलेस्ट कॉइन. एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो एनिमल है वो है आपका बूटलेस वर्म और इसकी जो लेंथ है आपके पास 55 मीटर है और ये हाईली, इसकी जो म्यूकस है वो हाईली टॉक्सिक है. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट लॉन्गेस्ट animal of the world is the bootless worm while the smallest worm is nematode. Worms. There are many different worms. बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत मुख्तलिफ worms मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हैं. Worms have a long tube-like body and no arms or legs. Worms क्या है आपके पास? ये लॉन्ग ट्यूब लाइक इनका जिस्म है और इनके आर्म्स और लेग्स नहीं होते, मीन्स बाजू और टांगें इनकी नहीं हैं. सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल. कुछ वर्म्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिकली बहुत छोटे हैं, वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर. जबकि दूसरे जो हैं वो ग्रो अप हैं और काफ़ी लंबे होते हैं. सम कैन कॉज इन्फेक्शंस. कुछ जो हैं इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं. सम आर पैरासाइट्स. कुछ जो हैं पैरासाइट्स हैं. एंड वी नो रियली वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स. पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी भी एनिमल की बॉडीज़ में अंदर या ऊपर रहते हैं. वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट. वर्म्स जो हैं कई जगहों पर रहते हैं. सम लिव इन वाटर. कुछ जो हैं पानी में रहते हैं. इन द सी समंदर में, और इन फ्रेश वाटर और ताज़े पानी में. वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड. जबकि दूसरे जो हैं वो लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं. और ब्रो मीन बिल में घुस जाना, मीन्स बिल में रहना, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे. कुछ जो हैं पानी में, समुद्रों में, ताज़े पानी में. जबकि कुछ जो हैं वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर या बिलों में, ज़मीन के अंदर काफ़ी घुस जाते हैं. सम वर्म्स सच एज अर्थवर्म्स. कुछ वर्म्स, अर्थवर्म मीन्स हशरातुल अर्श, आर यूज़फुल. कुछ वर्म्स जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं. दे लिव इन द सॉइल. वो मिट्टी में रहते हैं. एंड हेल्प टू इनरिच इट. The word enrich it means fertile here. Enrich means ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाना.
कुछ वर्म्स जो है हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं कि वो ज़मीन में रहते हैं और उसे ज़रख़ीज़ बनाते हैं. दे ऑल्सो aerate, bring air into the soil. aerate मीन हवा भरना, मीन्स कुछ जो है वो मिट्टी में जो हवा है उसको भरते हैं और जो हमारी जो ज़मीन है उसको फर्टाइल कर देते हैं, मीन्स ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाते हैं. I again read the paragraph. Please listen very carefully and attentively. There are many different worms. Worms have a long tube-like body and no arms or legs. Some worms are microscopically small, while others can grow much longer. Some can cause infections. Some are parasites and live in the bodies of other animals. Worms live in various habitats. Some live in water, in the sea, or in fresh water, while others live on land or burrow underground. Some worms, such as earthworm, are useful. They live in the soil and help to enrich it. They also aerate, bring air into the soil. Answer this question, students. 4 questions हम कर चुके हैं एंड आई होप सो आप उसे नोटबुक पे नोट डाउन भी कर चुके होंगे. टुडे यू राइट question number 5, 6 and 7 on your notebook. I read this for you people. Name the invertebrates that have more than 3 pairs of legs. ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स के नाम बताएं जिसमें मोर देन 3 पेयर्स हैं लेग्स के, 3 से ज़्यादा जोड़े होते हैं लेग्स के. So we learn the answer of this question is spider, crabs, leeks, centipedes, scorpions, etc. Question number 6 is what kind of insects live in colony or group? किस किस्म के हशरात कॉलोनी या ग्रुप में रहते हैं? Why is living like this useful to them? और इनका इस तरह रहना कैसे उनके लिए फ़ायदेमंद है? The answer of this question is bees, ants and termites live in colonies. They share the work by having specific jobs. ये अपने काम को शेयर करते हैं, हर एक को एक स्पेसिफिक टास्क देकर, एक ख़ास टास्क देकर टू डू करने के लिए, including depending their queens which lay eggs. और ये किस पे डिपेंड करती हैं? अपनी मलका पर जो कि अंडे देती हैं. क्वेश्चन नंबर 7 is which insect is a pest? Which insect is a pest? Are there any in your house? कौन से हशरात ऐसे हैं जो कि कीड़े हैं, पेस्ट हैं? Are there any in your house? क्या ये आपके घर में हैं? Flies, mosquito, cockroaches, fleas, lice, some kinds of beetles, etc. These are all the insects which are pests. Student, learn these question answers very carefully, and today's your diary is reading page number 37. Learn and write question number 5 to 7 on your notebooks. Thank you so much. Allah Hafiz.